टिल्ट बोर्ड भी हम एक्सरसाइज में जिम में यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। टिल्ट बोर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है क्या? टिल्ट बोर्ड आल्सो नोन एज बैलेंस बोर्ड, वॉबल बोर्ड और रॉकर बोर्ड इज़ अ वर्सटाइल टूल यूज्ड फॉर इंप्रूविंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड स्ट्रेंथ। टिल्ट बोर्ड को हम बैलेंस बोर्ड भी कहते हैं, वॉबल बोर्ड भी, रॉकर बोर्ड भी, और ये वर्सटाइल टूल होता है, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। और इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो बैलेंस कोऑर्डिनेशन को ये इंप्रूव करता है, साथ साथ प्रोप्रियोसेप्शन और मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी। ये इस तरह का होता है कुछ। प्रिंसिपल सीख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल आ जाता है टिल्ट बोर्ड का, प्रॉपर स्टांस होना चाहिए और प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए टिल्ट बोर्ड की। और जब भी इस पे एक्सरसाइजेस करानी है तो स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, कोई उसमें फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मेंटेन अ न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन टू अवॉइड एक्सेसिव आर्किंग और राउंडिंग ऑफ द बैक। योर हेड शुड बी अलाइंड विद योर स्पाइन। सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है फुट की पोजीशनिंग अलाइनमेंट में। प्लेस योर फीट अबाउट द हिप विड्थ अपार्ट ऑन द बोर्ड फॉर ऑप्टिमल बैलेंस। योर फीट शुड बी पोजीशनड सेंट्रली ऑन द बोर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट योर वेट इवनली। Knee की positioning, knee keep your knees slightly bent. This helps absorb the motion and keeps your body stable. Second principle, core engagement. Activate the core muscles. Engage your core muscles, abdominal muscles and lower back to stabilize your body as you balance on the board. This engagement is essential for maintaining control. Controlled breathing. Maintain steady and the controlled breathing. This helps with focus and stability. Third principle, balance and control. Focus on stability. The primary goal when using a tilt board is to maintain the balance. Focus on controlling the board's movement rather than letting it move uncontrollably. Small movements starts with these small movements, controlled movements to get accustomed to the board's dynamics. Gradually increase the range of motions as your balance improves. Eyes on a fixed point for beginners. Keeping your eyes focused on a fixed point in front of you can help maintain balance. Fourth principle, progressive difficulty. Start with simple movements, increase challenges gradually as your balance and strength improves. You can increase the difficulty by closing your eyes, shifting weight from one foot to the other, or incorporating upper body movements. Fifth principle for tilting board is safety precautions. Use on a stable surface. Ensure the tilt board is used on a non-slip surface to prevent it from sliding or moving unexpectedly. Clear surroundings. Make sure the area around the board is free of obstacles that could cause injury if you lose balance. Begin with sport. If you are new to using a tilt board, consider starting near a wall or with a chair nearby for sport until you gain confidence. Sixth principle for balance board is proprioceptive feedback. Focus on sensation. Pay attention to how your body responds to the board's movements. This focus on proprioceptive feedback, the sense of body positioning, helps improve coordination and balance. Adjust as needed. If you notice instability in a particular area of your body, consciously adjust your stance or muscles engagement to correct it. Seventh principle, consistency and patience. Regular practice. Use the tilt board regularly to build and maintain your balance and coordination skills. Be patient. Balancing on tilt board can be challenging at first. Progress may be slow, but consistency will lead to improvement. Eighth principle, incorporate variety. Dynamic movement. Once comfortable with the basic balancing, introduced dynamic movements such as tilting the board in different directions, rotating your hips, or adding upper body exercises. Use props for advanced exercises. For advanced training, you can incorporate additional elements like weights, resistance bands, or combining the tilt board with other exercises. Avoid overexertion. If you feel fatigued, take a break. Use a tilt board can be physically demanding, and overexertion can lead to loss of balance or injury. Modify if necessary. It if certain exercises feel too difficult or cause discomfort, modify them or reduce the intensity. 10th principle, purposeful training. Specific goals. Use the tilt board with specific goals in mind, whether for rehabilitation, improve athletic performance, or enhancing the daily functional movements. Mindful movements always perform exercises mindfully, paying attention to how your body is moving and how it is doing and how it is being challenged. इसमें हम देख सकते हैं इस तरह से हम बॉबल बोर्ड पे एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में स्क्वेटिंग करते हुए और सेकंड में ये कोर मसल्स को यूज़ करते हुए एब्डोमिनल एंड ट्रंक के मसल्स को। सेम ये स्टैंडिंग में बैलेंस को इंप्रूव करते हुए।